India is today the world's fifth largest economy. It is expected to become a $7 trillion economy by 2030, not very far from now. But in a world where external factors can very suddenly affect supply chains or inflation rates, how is India Inc. preparing to build their business and hence tomorrow's economy? Our next few sessions delve exactly on that. We'd first like to focus at the Gallantt Group of Industries. This is a company that's really helping India build its infrastructure dreams. I would like to very warmly welcome on stage Sri Chandra Prakash Agarwal, Chairman and Managing Director, Gallantt Group of Industries. Welcome, sir. I'd like to invite her on stage, Gulpanak, to please join us and facilitate this conversation. आपने 1984 में 1 लाख का लोन लेकर ये कंपनी शुरू की। उस वक्त आपके पास एक एम्प्लॉय था, योरसेल्फ, और आज आपकी कंपनी लिस्टेड है और 5000 से अधिक लोग गैलेंट फैमिली का हिस्सा हैं। उस जर्नी के बारे में कुछ बताइए। गैलेंट ग्रुप की जब स्थापना 1984 में हुई, उसके पहले हमारे यहाँ पेरेंटल बिजनेस फूड ग्रेन के ट्रेडिंग का था। तो थोड़ी ट्रेडिंग एक्टिविटीज़ में जब मैं पढ़ रहा था, पढ़ के निकला ग्रेजुएशन करके, तो मुझे कुछ उतना इंटरेस्ट नहीं था। तो मैंने अपने फादर से रिक्वेस्ट की कि साहब मुझे अगर 1 लाख रुपए मिल जाए तो कुछ हम छोटी मोटी कोई इंडस्ट्रियल एक्टिविटी करना चाहते हैं, मैन्युफैक्चरिंग की। वो उनके लिए एक बड़ा सब्जेक्ट था 1 लाख रुपये देना उस समय, बट समहाउ उन्होंने हमारे लिए मैनेज करके दिया और एक छोटी सी 9 वोल्ट के एक्सपेलर्स की एक तेल मिल मैंने लगाई। और वो जर्नी, एक आदमी, एक कर्मचारी, वही मेरा मैनेजर, कैशियर, लोडिंग इंचार्ज, सुपरवाइज़र, ऑल इन ऑल वही होता था। 2-4 लेबर साथ में होते थे। तो वो जर्नी वहाँ से शुरू हुई और मुझे खुशी है कि आज गैलेंट ग्रुप में 2 इंटीग्रेटेड स्टील प्लांट 1 मिलियन कैपेसिटी के, 129 मेगावाट पावर का जनरेशन है, 5000 लोग उसमें काम कर रहे हैं। कंपनी स्टॉक एक्सचेंज पे पिछले 15 सालों से लिस्टेड है। तो ये जर्नी यहाँ तक हम पहुँचा सके, ईश्वर की कृपा है और हमारे लोगों का, परिवार का, सबका उसमें सहयोग रहा है। $5 ट्रिलियन इकोनॉमी का जो एक लक्ष्य, जो एक अचीवेबल लक्ष्य है, आप बताना चाहेंगे उसमें इंडस्ट्री का क्या रोल है और उसका इम्पैक्ट जनरल पब्लिक पर क्या होगा? तो हमारी ग्रोथ, अगर हमको 5 ट्रिलियन इकोनॉमी तक 2025 में पहुंचना है, तो इंडस्ट्री के अलावा उसका कोई रास्ता नहीं है। इंडस्ट्री का ही उसमें मेजर रोल है। अगर हम आज देखें, हम लोग जनरली ये मानते हैं कि जो वेस्टर्न कंट्रीज हैं, उनके लोगों का जो जीवन स्तर है वो कंपैरेटिवली बेटर है। रीज़न एक ही है कि उन्होंने वो ग्रोथ पहले हासिल की जिसकी तरफ अब हम जा रहे हैं। जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसका रोल कितना मायने रखता है इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट में? देखिए, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के लिए रोड कनेक्टिविटी, रेल कनेक्टिविटी, एयर कनेक्टिविटी, सी पोर्ट्स, स्किल्ड एंड अनस्किल्ड लेबर, पावर जनरेशन, ये सारी चीज़ों का, सी पोर्ट्स का, इनका सबसे ज़्यादा अहम रोल है। रोड के बारे में तो हमको लगता है कि हम लोग जिस स्थिति में हैं, 10 साल पहले इसकी कल्पना भी नहीं कर सकते थे और आने वाले दिनों में जो हमारी आवश्यकता है उसके अपेक्षा अनुसार इसमें प्रगति दिन दूनी रात चौगुनी गति से हो रही है। रेल के मामले में भी सरकार के पास बहुत बड़ी बड़ी योजनाएं हैं, बहुत इनोवेटिव आइडियाज़ हैं। वंदे भारत वगैरह की स्कीमें इम्प्लीमेंट हुई है, दूरी घटी है, संसाधनों का उपयोग बढ़ा है। लेकिन अभी गुड्स ट्रैफिक के मूवमेंट में, गुड्स ट्रैफिक के हैंडलिंग में अभी स्थिति हमारी संतोषजनक नहीं है। अगर हम 5 ट्रिलियन इकोनॉमी की तरफ जा रहे हैं तो ऑब्वियसली उसका लोड गुड्स मूवमेंट पे आने वाला है। सी पोर्ट है, सी पोर्ट्स में भी हमारी हैंडलिंग अभी बहुत पुअर है। अभी भी जहाज़ वेटिंग लिस्ट पे रहते हैं जो विदेश से सामान लेके आते हैं। तो अगर इसमें और प्लेयर्स आएँ और कंपटीशन इसमें बढ़े तो ये फैसिलिटी और बेटर हो सकती है और इसकी आवश्यकता भी है। तो इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए संसाधन है और इंफ्रास्ट्रक्चर का जो रोल है वो भी उसी तरह का है कि हम विकास की बात करें
और उसमें इंफ्रास्ट्रक्चर न हो तो विकास के बारे में बात करना, विकास के बारे में सोचना मुंगेरी लाल के हसीन सपने देखने जैसा ही है। सरकार की बात करते हुए दो सवाल, जीएसटी के दृष्टिकोण से खासतौर में जब आप स्क्रैप डीलर्स की बात करें, क्या इम्प्रूवमेंट्स आई हैं? आपकी बहुत बड़ी क्लाइंट लिस्ट है, कॉर्पोरेट क्लाइंट्स भी हैं, सरकार तो क्लाइंट है ही आपकी, उस पर भी थोड़ी सी लाइट ज़रूर डालिएगा, कॉर्पोरेट क्लाइंट्स वर्सेस सरकार। देखिए, जीएसटी एक्ट आने के बाद से जो मल्टीपल कंप्लायंसेस थे, मल्टीपल रिटर्न्स थे, निश्चित रूप से उसमें सरलता हुई है। एक रिटर्न से एक कंप्लायंस से काम हो रहा है, बट एट द सेम टाइम जो मल्टीपल स्लैब्स हैं ये थोड़े कम होने चाहिए, ये 3 स्लैब में आना चाहिए। ये तो एक बेसिक इशू हो गया। अब आपने स्क्रैप के बारे में कहा है, इसमें बड़ी समस्या है। अब जीएसटी में जैसे हम लोगों के रॉ मटेरियल में करीब 85% तो आयरन और कोल ये सब है, 10-15% के करीब में स्क्रैप का भी उसमें प्रयोग होता है। अब स्क्रैप हम लोग अनऑर्गेनाइज सेक्टर से, छोटे छोटे व्यापारियों से वो सप्लाई होती है, वो फैक्ट्री में आता है। जीएसटी विभाग उनको रजिस्ट्रेशन देता है, उस रजिस्ट्रेशन की स्ट्रेंथ पे वो ट्रांसपोर्टेशन के लिए ई-वे बिल जनरेट करते हैं। हम जब किसी सप्लायर को अपने यहाँ एंगेज करते हैं तो उसका केवाईसी करते हैं, उसका बैंक अकाउंट, आधार कार्ड एक्सेट्रा सब करके कि हाँ ये बोनाफाइड सप्लायर है। उसका माल आ गया, हमने उसको पेमेंट कर दिया, जीएसटी का फंड हम रिटेन करते हैं। फिर वो 20 तारीख को रिटर्न फाइल करता है। वो जब रिटर्न फाइल करता है तो वो जो जीएसटी उसने हमसे रियलाइज़ की है थ्रू बिल, वो इनका पोर्टल ऑटोमेटिकली हमारे अकाउंट को क्रेडिट दे देता है, और जब वो क्रेडिट दे देता है तो हम उनको पेमेंट कर देते हैं। अब उसके कुछ दिनों बाद विभाग जागता है कि साहब वो जिन लोगों से आपने माल खरीदा उन्होंने जो रिटर्न फाइल किया उसमें कुछ मैनिपुलेट किया, या आपको माल बेचने के बाद वो भाग गए, तो अब इसका पैसा आप जमा करिए, क्योंकि वो तो भाग गया। मेरा ये कहना है कि आप हमसे दोबारा जीएसटी की बात करते हो कि दीजिए, जो जीएसटी का अमाउंट हम दे चुके और जिसको सरकार वसूल नहीं पा रही है, तो सरकार अपनी असफलता या इन अदर वर्ड्स इनकॉम्पिटेंसी को हमारे ऊपर इम्पोज कर रही है। दिस इज नॉट द वे। क्लाइंट लिस्ट के बारे में बोल दीजिएगा। देखिए, गवर्नमेंट सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर में डील करने में सबसे बड़ी सुविधा प्राइवेट सेक्टर के साथ क्या है कि कोई रेट्स का नेगोशिएशन है, पेमेंट की बात है, कुछ आपको करना है तो आप किसी से बात करके उनके यहाँ जो भी आपका बायर है आप उसको सेटल डाउन कर सकते हो। गवर्नमेंट सिस्टम में एक सेट नॉर्म से उनकी कोई पॉलिसी है या कोई रेट 1 महीना पहले तय हो गया, उसी रेट पे लेंगे, उसी पॉलिसी से लेंगे। कोई प्रॉब्लम है, अगर उस प्रॉब्लम को वो कंसर्न ऑफिसर या डिपार्टमेंट ठीक भी करना चाहे तो इतना बड़ा चैनल है कि वो चीज़ें बहुत टाइम लेती हैं। दूसरा, कभी कभी ये भी होता है कि आपका पेमेंट वगैरह गवर्नमेंट सिस्टम में पड़ा है, इतने देर से आता है, तब तक आप एनसीएलटी पहुँच जाते हैं। वो हो भी रहा है जी, बिल्कुल। तो उस समय ये लगता है कि अगर आ भी गया कभी, तब तक आपकी स्थिति इतनी खराब हो जाती है। इट इज ऑलवेज कंफर्टेबल एंड बेटर टू बी डील विद प्राइवेट सेक्टर। थैंक यू वेरी मच अग्रवाल साहब। जाते जाते एक संदेश। देखिए, सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं है। इसके लिए आपको दिन रात मेहनत, लगन, समर्पण के साथ काम करना है। आपकी थॉट प्रोसेस पॉजिटिव होनी चाहिए और आपका लक्ष्य के प्रति वही अर्जुन वाला रवैया होना चाहिए कि मछली की आंख में ध्यान लगी हुई है। असफलता आएंगी, उनसे घबराना नहीं चाहिए। और उसके लिए 2 लाइन मैंने लिखी थी, वो इस औद्योगिक सफ़र में डर मुझे भी लगा फासला देखकर, डर मुझे भी लगा फासला देखकर, पर मैं बढ़ता गया रास्ता देखकर। डर मुझे भी लगा फासला देखकर, पर मैं बढ़ता गया रास्ता देखकर। खुद ब खुद नज़दीक आती गई मेरी मंजिल, मेरा हौसला देखकर। थैंक यू। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत धन्यवाद. I'd like to invite Munish Atre, Head Sales ABP Network, to kindly present Mr. Agarwal with a token of our gratitude. When the one thing that India loves is to shine, quite literally, we are one of the largest consumers of gold and precious stones in the entire world. We now take a look at a company that's been in the business for over 5 decades, Senco Gold and Diamonds. Please welcome on stage, ladies and gentlemen, Mr. Suvankar Sen, MD and CEO, Senco Gold and Diamonds,
He, of course, joins us to talk about India Inc. and its hopes for the Indian economy. Rupanag will be facilitating this session. From 100 crores 15 years ago to 3,500 crores. Tell us about this journey. So, the journey as it begins starts with a vision, with a thought. So after finishing my education, finishing my MBA from IMT Ghaziabad, when I joined business along with my father, as the turnover was 100 crore, you start thinking big. You start having a goal in mind and say that let us work towards achieving the goal. But that is a part of the vision. But then what is important is the execution. And what are the processes that you move towards achieving the numbers? So it starts with, reaching out to more and more customers. Customers used to come from various parts of the country trying to buy your kind of jewelry. Why? Because, Bengal, where we originally belong to, is famous for its handcrafted jewelry. The karigars working all across the country comes from the villages in and around Bengal. All over the world, 90% of the cut and polished diamonds are done in India. We are the second or the third largest jewelry manufacturers for the world. So it is a skill that is inherent with us in our country, in our part of the country for more than 5,000 years. So it was only but natural that you reach out to more and more customers. And then, along with your stores, how do you reach out to them? So today we think of online model, there is a whole platform. But at that point of time, it was through the franchisees that we started entering, not only the bigger cities, but also into tier 2, 3, 4 cities of the country. So the growth of the country as we see currently is not only the urban India, but it is also the rural Bharat. So together, we reached out more. And then when you deal with precious jewelry, how do you deal with them? You need to have a very strong backend, a very strong tech-oriented backend that helps you to control. So implementation of processes, audits, ERP systems, so that you're tracking the data, you're ensuring that you're getting the right kind of product to the right kind of customer. So there is a whole lot of back-end thinking, and finally the execution, and then the brand building. And that's where you see that with all the effort of the full team, you reach a number, and then there's more to achieve in the future. And I hope that number goes higher and higher with all the things that you have planned in Whatever the coming year. we've been hearing about the India story, I think we as entrepreneurs are extremely optimistic and positive. What the role of the jewelry industry is in India's growth story? So see, jewelry industry plays a very integral role. First, we have heard of the Indian population, right? We are employing almost 75 to 80 lakhs of people in our industry, be it at the karigar level, at the store level. So productive employment of the new generation is very, very critical, and we are working really, really hard to work on the skill. Second is in terms of exports. So today, with the India growth story, the $5 trillion economy, the $7 trillion economy, we are contributing with more than 7% in the total GDP of the economy as an industry. Our exports, that counts to about 10 to 12% of the overall exports. So as an industry, we have been working very closely with the government to ensure that the consumption goes up for the new generation customer, which is very, very critical. Because after all, these precious jewelry, gold, diamonds, it is a real asset. And there's a saving that happens for the family as well. To shed some light on how the collaborative effort of trying to bridge both Bharat and India from a delivery standpoint, from a targeting standpoint, how does that sort of measure in your scheme of things, and what kind of lessons can people take from that? So it all starts with the use of technology in all aspects. So let's say, as I was mentioning, the production aspect of it. Initially, people were doing handcrafted. The karigars were not so tech-enabled. But as an industry in manufacturing, it's called computer-aided design, computer-aided manufacturing, where the perfection of the jewelry to make it much more international standard is being worked towards. The quality of the jewelry, hallmarking as a process. So the industry, along with the government, is ensuring that the consumer gets the right kind of product. So that is some kind of machineries that are being used for manufacturing. The second part is in terms of service. So the industry is working towards like using of CRM, the customer, what kind of jewelry they are buying, and to address them, their needs. So that if someone wants to buy jewelry for office wear, you're providing that based on the need of the customer. For marriages, you have the data, you're providing it accordingly. So that is in terms of service. In terms of product,
digital gold. That's something which is very, very interesting, where for the new generation, you don't have the risk and the headache of storing gold in your almirah. It might get lost. So as an industry, as a brand, we've made something called a mydigigold.com, where for as low as rupees 250, one can buy the gold and we will store it on the behalf of the customer. And as you keep accumulating it, when you feel like going and buying a jewelry or gifting it to your loved one, you can just go to the store or go online and redeem it. So this is how, the service and the thinking to help the young generation save in gold, save in jewelry. These are the new kind of products that are being kind of implemented. Then the whole concept of lab-grown diamonds. Now I must tell you that worldwide, what are the ways in which, not only in the domestic consumption, but internationally, in the US, there's a very, very need of such products which is environment friendly. So you're not having to mine to get your diamond out, but you're creating in labs. And in our country, we've become almost the second largest exporter or the largest exporter of lab-grown cut and polished diamonds. Now, jewelry is going to be created. In 5 years, things will be different. So these are the new kind of products that will help the young consumers to save their money, to buy jewelry, to enjoy jewelry. And that's how I think as a country and as an industry will help to moving forward. You want to talk about Indian brands going global? How do you see that panning out? So, see, India has always been a manufacturer. But what I think as an industry and the government need to work towards is building a brand India. So brand India, made in India jewelry should stand for quality, should stand for design. We have a very long culture of art, of craftsmanship, as I mentioned. How what you are doing actually supports karigars? So we are working very closely with the karigars. Today we hear of ESG, right? The environment, the social part, and the governance part of it. Now, when it comes to the social part, we have spoken of what? That growth is important. But what is important is inclusive growth. The government has been investing in something called common facility centers across the country. And working very closely with the industry, there is a concept of mega common facility center that is being spoken about. Jewelry parks are being built all across the country, in which it will become an ecosystem which will be much more organized. So these are such initiatives where we are being able to bringing the technology as big organizations and then helping the karigars use those technology and creation of jewelry. When the last 2-3 years, the pandemic was there was no work. So as an industry, we went out of our way. As a company, we supported the karigars. We took care of their health, of the family. We're working, training women to be a part of the manufacturing process in the workforce. Because we are in the business of design and art, that members of the LGBTQ community, because there is a lot of, I would say, artistry that is there in them, the flair is in them. So we as an industry are trying to make them a part of our industry, working. If there's one thing that you'd want to say, how do you see your future and how do you see the future of India? And what role could technology and the digital interface play in that? So see, digital and technology has opened up the world. People, whether they're in the city, the young generation, or in the tier 2, 3, 4 cities, their aspirations are equal. Their exposure is equal. As an industry, we need to go into the minutest of last mile requirements of the consumer and especially the young generation. So working on products which are not only to be kept in the locker, but the everyday wear jewelry. Also, it will work as a savings and investment for the consumers. I wish you all the very best. Thank you for sharing your thoughts with us. Thank you very much for your thoughts. Requesting Munish Atre ji to please join us on stage and hand over a memento to Mr. Sen. क्या मजबूरी है मेरी बताइए। मैं अभी आपको बताती हूँ कि मैंने ओए होए 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 नमकीन के चटकारे लेते हुए टकटकी मार के डिबेट शो को पॉज रिपीट कर करके देख रहे हैं जोगिंदर जी। इनकी तरह आप भी देखें अपने फेवरेट डिबेट्स को रिपीट कर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।